Awesome. Please start. Yes. We will start with about the company. So Usha Martin is well known for its wire rope, and recently it was also acknowledged as the fourth or fifth largest producer of the wire rope. And it was established in 1960, and it is also producing the multi-unit, which is including wire rope, wire, LRPC strength, which is the next coming slide. The company has the mainly 6 manufacturing plants, 3 in India, that is Ranchi, Hoshiarpur and Silvassa in India, 1 in Dubai, 1 in Thailand and 1 in UK. It produces a wide range of wire rope in the world, and its infrastructure facility is well known for its high capacity machine for the manufacture. It has 2 R&D units, which is 1 in Italy and 1 in Ranchi. Where the global R&D center of Italy is well known for its R&D process. Even the company takes a pride in mentioning that. It has the various distribution plans as it serves multiple companies. So they are actually providing the product in the Southeast Asia, Europe, South Africa, America, all over the world. Which is given over here. They have the distribution plant in UK, North America, South America, Netherlands, Australia, Russia, Singapore, South Africa, Indonesia, Vietnam, China, Kazakhstan, and Iran. The Usha Martin facility in Ranchi, which was the first facility of the company, which is well known because it is like largest wire rope manufacturing in the entire world under the one roof, and it was started in 1961. The one remark is that the fire broke out in this plant on January 2nd, 2023, which the company has not mentioned the cost of damage. They only mentioned that they were able to curb the fire and able to protect their plant. Before we start, I just wanted to give the gist that the company has been in a lot of debt before 2020, and because in order to save its company from getting bankrupt, the company has sold its one unit, that is 1 million ton integrated steel plant to the Jamshedpur Tata Steel for 4,200 to 4,600 crores, and after that they used this proportion for paying off the debt and restructuring their whole company. So before we proceed, we will look at the product portfolio. So there is a mainly 3 product portfolio, that is wire rope, wire, LRPC strength. They also provide the services, but which is not given as a different segment of the company. They actually provide it as an allied services to the product they provide. And then mainly the segments they provide is the crane ports, mining, bridges structure, the railway tracks, the elevated structure of the transportation, fishing, and high-speed elevators. Now, first we will see about the wire rope. The wire rope has the different usages, that is crane rope, mining rope, elevator, oil offshore, fishing, general engineering, aerial, structural rope like, as I mentioned, the bridges one, and the conveyor cord. I have highlighted these 3 because the company has mentioned that these 3 sectors provides them the highest margin, and they are focusing on increasing their sales in these 3 sectors more, because as they are focusing on wire rope, they are also focusing on these 3 sectors, including the elevator as well. But the elevator has the 3 to 8 years of replacement. Means like once the elevator rope is utilized, it takes 3 to 8 years to come back as an order. So but these 3 units have like on an average 1.5 to 2 years of replacement, which could be like quite consistent for the company in the future. Whereas the wire is considered, these are all of the different types of wire they provide. Whereas the LRPC is concerned, LRPC is low relaxation pre-stressed steel strength, which is actually what they do. They mention that the raw rope has pre-stressed so that they are more durable and have the strength to lift the heavy weights. So they are basically using the heavy processes. And pre-stressing materials, they also have the Usha Smart plant, which is located in Ranchi, which is specifically allocated for this production of this pre-stressing machines, which they also use in the LRPC strand and as well as sale to the B2B companies. Whereas the optical, yes, sir? Just we go back to the previous slide. Okay. I just wanted to make sure everybody understands these items. If not, maybe I can also help from my background.
and maybe Ashutosh, you can also help. Maybe you also know a lot of these things. Nirvan or Shantanu, anything that you don't understand about the products, or anything that you want to understand, maybe this pre-stressing and all, I can explain. Yeah, if you can talk a little bit about LRPC and what So, this is. so what I understand about pre-stressing is basically, see, when you have, say, for example, railway track, right? These tracks are laid horizontally, and when you have a train going through on top of it, at certain positions, the weight would be so high that the railway track will bend, right? And on frequent bending of those, I mean this bending would be something like, imagine you have a rod, and you kind of stress it. I mean, you kind of join the ends and then release it, right? You make a loop out of it and then release it. What happens over time, cracks start to get created on the other part of it, I mean on the opposite direction. This is called fatigue. Have you ever experienced this? I mean, when you try to break a steel or a thin plate by just turning it upside down multiple times. Yes. Yeah, Can you I imagine mean, that? right, Yeah, yeah. So yeah, you're saying by twisting it, right? yeah. By twisting it. I mean, Yeah, just doing that. I mean, yeah. I mean, this is called fatigue failure. So right. what these guys do is they try to pre-stress it. So basically, it would be stressed in such a direction that when the weight goes over this track, uh, the metal will not get stressed. Instead, the metal will get de-stressed because it will be Okay, already stressed in the opposite direction. okay. Right. That way they increase the life. And this is also a very critical application in many such high weight activity. Even for springs, this is needed. Also for ropes, I assume you will also need to have some pre-stressing done into it, so Yes. that when the load comes, you don't want the load to kind of stress instead, you want to de-stress it. That's a much safer approach. Okay, Yeah. got it. uh, just imagine another maybe example would be, say for example, if I have to put a load on top of a flat surface, what I will do, I will make it into an inverted U. So it will be like an N, right? A curved surface. And then when I put the load in the middle, it will automatically become a flat surface, right? Because Hmm. of the load. That is basically pre-stressing. So Anyways, yeah. Hmm, for yes. the train tracks, I'm just trying Hmm, to visualize. So on hmm. train tracks, these LRPC strands, they go in the concrete slabs or they go on the actual railway track? I think they go on the concrete slab, but Okay, I have to check this one. okay. So the slabs that are there on which the track Uh, rests, yes, on they are reinforced with these LRPC wires inside, is it? correct, correct, Okay, correct. okay. Okay, please continue. Thank you, sir. Optical fiber cables are also the part of the company's product, which is actually produced in the Silvassa plant, as I mentioned, one of the plants, and it is basically used for the communication cable wires. Whereas the industrial manufacturing machines are concerned, the company is producing the machines like industrial machines like wire drawing machine, stranding machine, wire rope closing machine, steel plant equipment, material handling equipment, bright bar manufacturing, armoring, rewinding machine, copper coating lines. So they are also like B2B, as well as they also utilize these machines for their own production process as well. And they have not given the different bifurcation of segment revenue of this sector. Well, just giving a glance of it, that is 60 years of experience of the company, 6 manufacturing units, R&D are the 2, Italy and as well as Ranchi, and 6 continents they provide, 3,100 employees, more than 10,000 customers, and 250 distribution channels as well as centers. Here are the crisp of it. As I have mentioned that India, Dubai, Thailand, and UK are the manufacturing plants, and the rest are the distribution channels and partners. Whereas in India, we can see that they are all over the 28 states, and the main manufacturing plants are at 3, but they have the Mumbai and Chennai as a global distribution center. Well, here I just want to give, this is very important part of the slide. Here we can see that from FY22 to 23, the wire rope segments has increased, as the company has mentioned in the con call as well, that they are focusing on increasing the production of wire rope and focusing on the sale of the wire rope. They have planned to increase it to 70 to 75% in the coming 2 to 3 years, and then increases to 80 to 85% coming 5 years.
So typically they are actually not focusing on LRPC. They have said that they are going to keep LRPC at what utilization level it is. Whereas the wire and strand are concerned, they are focusing on the wire, not that much, means that there is a certain proportion of production capacity. The capex they are making are contributed to the wire, or somewhat less, it is very less. And others are like services and manufacturing machines that we have talked about. Then the segments they provide here, that as I already mentioned, that the crane, oil and shows, and then the construction infrastructure are the main segments the company is focusing, which is can be seen over here as well. The crane has increased to 14%. The oil and offshore has increased to 16%. Construction has increased from 22. I mean, it has lower like 16%. But they also mentioned that there are projects in pipeline that they're going to focus on. And the other segments are important as well. Engineering has been a good proportion amount, but they are more focusing on this three because it provides more margin to the company. Whereas the geography segmentation is concerned, we know that India is the major proportion, than the Europe. Asia, Pacific is 16%, but they are more focused to the America. They have mentioned in their con call that right now they have 2 to 3% of market share in the America, but they want it to increase in the future. They have mentioned that if the 1% of the share increase in America, there would be like 50% increase in the sale volume of the company. And yeah, this one, like 51 to 55%, it is the increase in export of the company, international business of the company. Here is the gist about the details of the business activities the company is into it. We have known that all like wire rope, wire and strands are providing 95.22%, whereas wire rope is standalone provides 57%, and then LRPC 24%, and wire is 13.17% to the total turnover of the company. And the company provides like 28 states of the country, whereas the 71 countries internationally. Well, this is the important slide. The company has been talking about the capex they have made in FY21 and FY22, which actually functional in FY23, whereas they have planned the capex in the 2 phases for the FY23. I mean, for the phase 1, that is 310 crores, which will go in the Ranchi plant, will be functional by the end of the Q3. So means it will be available for the 1 quarter only. And then the second phase will start after the first phase is completed, which is 167 crore, and they are focusing same on the wire rope and some proportion to the wire as well. And this will be started from phase 2, and which they are expecting it to coming online from FY26. Whereas they are also planning of having the capex of 62 crore in Thailand, which is mainly in wire rope, and which is they have not mentioned when it will come online, but as they are making it the expense at FY24, I'm expecting it to be FY26, because as this is also coming online, in FY26. And some of the capex they have already planned that they are 20 to 25% will come from the debt. Can I proceed? Actually, what is this capex for? So, like, have they spelled out how much for wire rope, how much for wire? Well, they have not mentioned it in the annual report, but they have mentioned in the con call that they are focusing on the wire rope only. So, as I mentioned in the capex wave 2, that is 167 crore, they have mentioned that they will attribute some to the wire as well, but they have not mentioned how much percentage wire and how much percentage wire rope. And wave 1 is completely wire rope? Wire rope, yes. So what is the existing capacity in terms of metric tons per annum for wire rope? And so I want to see that this 47,000 is what percentage of existing capacity? So, okay, I have written down, but I don't remember it. So that is part of your communication. So actually, this is like, take this down as feedback that when you're saying capex and some capacity is coming online, you have to always give the base capacity so that we know what percentage, right? Yes, sir. So I need to know this. So just make a note of it. In the financial model, but I will keep in mind that next time I will keep it. Yes. Sure, and let us know the figure whenever you get it. Yeah. Sure, sir. Well, promoter holding, I want to give it just that the promoters holding has been constantly decreasing over the years.
which is basically the company main owner, has like Prashant Jawar has get out of the company and sold his shares. Whereas FIIs, we can see that it has been increased in FY 2023, and DIIs has increased a lot in June 2023, and public shares are consistent. We will get the more detail in the next slide. The DII has been made by the Quant Mutual Fund, whereas FII backed various India Opportunity Fund, India Fund Limited, and India Opportunity Growth Fund Limited. India Fund Limited has took up their shares from the company in June 2023. Here are the promoters of the company. Well, there are a lot of promoters of the company. So what I did, that Rajiv Jawar is a managing director of the company, and Brij Kishore Jawar was the previous managing director of the company. So he is passed on to the Rajiv Jawar, where the Shreya Jawar is a strategy and growth team. When I went through the different companies which are holding the shares, I found it out the major of this, they're like Neutral, Peter House Investments, Usha Martin Venture Limited, Brij Kishore Jawar Investment Trustee, Brij Family Trust. These are all indirectly held by Rajiv Jawar. So he is one of the director of the companies which are holding the shares. So it is majorly a promoter holding company. Where we go for the financial snapshot, revenue growth, we can see that the company has been growing quite significantly over the years. In FY 2020, the company has, of course, made the divestment, and after that, the company has been focusing on the wire rope and wire and LRPC strand, and which has performed really well because of the high demand in the market, infrastructure, and everything. The company also mentioned that the company is very prone to the oil and gas industries. Like when the oil prices goes up, the extractions extraction process start, and because of that, the demand for their product increases, and thus that helps in this growth factor of the company. Whereas we can see the margin has been quite good, but not that great, because in 2020, the company has made the divestment. After that, it is quite flat, but the company has done well over the previous years, keeping up to be the 16% margin, and that is also because they have focused on wire rope sector more. At the PAT, we can see that it is a fall. Here the PAT is high. This is all due to the other income. In 2020, when the divestment was made, the other income was quite high, and because of that, their margin has gone up. But here we can see it is quite consistent. Whereas the debt to equity ratio has constantly fallen, and which is a good about the company, because after 2020 they have paid off the debt and they are focusing on reducing the debt. Because of the debt, they were almost bankrupt, so they are focusing on reducing the debt. But for in FY24, they are planning to increase the debt by 25% in order to make the capex. ROE, ROCE, same, it is applicable here, the other income effect, whereas here it is quite constant and increasing. I want to mention that in 2021 to 2022, the other income was quite high in the Q4, whereas in 2023, it is quite, consistent. So I have taken like averages of these years for the valuation of the other income in my financial model. So it does have the impact of other income on it, even though it is not a huge sum of amount, but it does have it. CFO EBITDA, company CFO EBITDA is falling. One of the reason is that CFO is quite consistent, but their EBITDA is increasing. But that is also the proven that the EBITDA is not converting into a cash. One of the reasons that I thought that it could be because the company is based on the contracts, right? So once they get the contracts, they are making, recording the revenue as they're processing the manufacturing. But at the same point of time, the cash won't come in until they deliver the product. So maybe because of that, I think the cash flow to EBITDA is lower. So please guide me if I'm wrong. Or days of working capital, it is quite constant and consistent. So it is quite 120 days, but I don't think that is quite a concern. And whereas the EBITDA coverage ratio is a concern, it is very good. As the debt has reduced, interest has reduced, and EBITDA has increased, and thus it gotten better over the years. In the forensic analysis, I want to mention one more thing, that I have removed the pledge, shareholding, because before this presentation was made, it was like 54%
of pledged shares were there. But right now in June 2023, the company has paid off that. Remove that pledge shares and it becomes 0%. So it is a good sign that the company has mentioned in the con call that they are planning to remove the pledge shares, and they already did now. The forensic analysis is concerned about promoter skin in the game, which is 47.87%, less than 60%. But I want to say that whoever the promoters are there in the group, when I calculated the net worth invested in the company, it is quite well. Almost like 100% for many of the promoter, including the Rajiv Jhawar and Shreya Jhawar and the rest of them. Whereas the cash generation is like 0.534, which is lower than the 0.7. That's why it is 0, which is, I also said that maybe because of, high time difference of getting the orders cash after delivering the product. And miscellaneous, which is like other expenses are high for the company, which is like 9%, 8 to 9%, and normally average peers are 4 to 5%. But I think that the other expenses are high, which the company has also mentioned, because it includes the selling and admin expense to it, and the selling and admin expense, which is increasing due to the new branches and distribution plants, distribution centers they are establishing. So I think it is quite okay with it. The growth drivers, the first growth driver, that is the growth prospect in international market. The company has mentioning the Europe and America market a lot of time in the con call, and one of the reasons of the European market, which has grown so much, like 22% of the company's sale is contributed to European market. It is because the company has been there in the European market for 30 years. So they have mentioned that they have quite a grip in the country, as well as because of the Russia-Ukraine war, which I have mentioned here, there is a gap in the demand for the wire rope, which actually was used to be imported from Russia by the Europe. So the company has mentioned that they have the 50% utilization right now. So even if they got the better orders in the future, they are still capable of utilizing this plant for the future volume of sales. So this is the growth prospect in international market. Whereas the increase in price in oil and gas is concerned, in the future, if the oil and gas prices are increasing, so of course the extraction business increases, and thus the order comes in the business for the company. Whereas the 15 billion wire rope project by government under transport ministry, there was a news about it that the transport ministry is planning to improve the transport system, and for that the 15 billion wire rope would be utilized. So company is expect that they will fight for it, and if they get the project, they will of course deliver it. But at the same point of time, they have mentioned that the replacement would happen in 8 to 10 years. So even if they get the project and have a good sales, still there would be no other sales for the 8 to 10 years. So it is not consistent for the coming future. Where the company focus in value-added product segment. Now this is important. Company is focusing on the transformation, and the company is saying that they are totally going to focus on the wire rope instead of LRPC, wire or other services. They have mentioned that the wire rope has the highest margin, and compared to any other product, they wanted the contribution to increase to 70 to 75% in the 2 to 3 years, and 80 to 85% in coming 5 years. So currently it is 67%. Company also provides the services in the field of uplifting, socketing, inspection. This is the service part of the company, allied services that the company provides. Its margin is 4 to 5% higher than the wire rope. Its contribution is low, but the service contribution is low, but company has started the services in Thailand as well, and it already provides services in UK and Singapore. The only problem is that the services segment revenue has not been given separately in their annual report, but anyways, it can improve their margin in the future. So, shall I go to the financial model? I had a question before you go over there. So do you have the figure of the margins for the wire rope? How much do they? Actually, that's the thing, that they have not mentioned the margin of the wire rope at all. Like 18%, it is like they are expecting of EBITDA margin in the future based on the wire rope segment and all other segments. So I'm expecting it should be on an average like 18 to 19%. Okay. Okay. So shall I go to the financial model? Yes, please. Yes, Sonakshi.
Now here we will start with the first revenue projection. I have divided it into like wire rope, wire and strand, and LRPC. I will talk about wire rope later because it has capex and I have calculated it above. In LRPC, what I did was the company has mentioned in their con call that their current utilization is 500 MT per month. In 2023, it was 60,000. So they're expecting in FY24 as 65,000. They didn't mention it. It's just half of the year has already gone by. So if they are going to improve, they have to improve in coming 18 to 24 months. So 60,000 year and 65,000 year as the 60,000 to 65,000 range they have provided. So the current it is like 500 MT per month, as they have mentioned. In the coming month, they have mentioned that 800 to 1000 MT tons efficiency would increase in the coming 18 to 24 months. Based on that, I have taken 600 and 900 to be on the lower side. So what I did, here are the volume, here are the revenue. So the revenue per volume is calculated. So I keep it as constant for these 3 years. Then this is like constant. Here, what I did. So just give me a second, I think. So just a second. Yeah. There are apparently 4 threads in Value Picker on this thing, on Usha Martin. So I think in July 22, Ankit gave these realizations. I can see, I think, but I have to go through it. It's a long post. Yeah, please continue. Yes. Okay. So here what they have done is like 78,000. What I did is like multiplying it with 600 divided by 500. Matlab 600 MT divided by 500. That is the previous one. So it comes to be the 600. This is the volume. This multiplied by per ton will give me the revenue. Is that okay? Efficiency increase is exactly what, Sonakshi? I didn't understand. Okay. Actually, as per the company, they are not going to have the expansion. Okay. So what they have mentioned in the con call that they are planning to shift their LRPC low value product into the better margin product like LRPC pre-stressing product that we have seen. So what they have said that they are actually replacing their old machine to the new machine, which they have already made the expense for. So right now they have said that their current capacity is 500 MT per month, but it will increase to 800 to 1000 MT in the future. In the coming 18 to 24 months. Okay, got it. So based on that, what I did that I took like 600 MT per month and 900 MT per month for the safer purpose. And how much are they selling out of the 65,000 or 60,000? Are they fully utilized or? These are the volume and this is the revenue they are making. No, these volumes are capacity or the sale volumes? Sale volume. Sale volume. Yes. Okay, so you're saying their machine efficiency will increase, so that's why the sales will increase, but that is not necessarily correct, no? So right now 60,000 is the sales volume. How much is the capacity? Like, are they at 100% capacity already? So machine becoming more efficient is just a production thing, right? Yes, sir. It's not, you're automatically assuming they'll sell all that. So is that the right assumption? Are they currently 100% utilized? They have mentioned that they are able to sell the 100% of the product, but in the future, I'm not sure if they are able to. Because what you have to model is sales, right? So like you have to form some view that, okay, if their capacity is doubling in 3 years, will they be able to sell that capacity? If they are able to sell that capacity, then it's fine. Like you can assume that to be the LRPC revenue. I'm sure they must have spoken about this in the con calls, etc. You can take a look again. Okay, sir. And even if you don't get into the con call, there are 4, as I told, 4 threads of in Value Picker. Go through it. I mean, all of these questions are over there. Yes, sir. Okay. Okay, here it is like उन्होंने MT per ton दिया हुआ था. Can you see? Yes, yes. Yeah.
So in Ranchi, it is like 1,86,000, Hoshiarpur 48,000, Thailand 36,000, UAE 15,000, and UK is like 11,500. So they have not mentioned कि वायर रोड का अकेले का कितना कैपेसिटी है LRPC का या मतलब इंडिविजुअली नहीं दिया हुआ है ऐसा. Yeah. Okay. So shall I go further? Yeah, go further. Okay. So this is how I calculated the revenue for LRPC. Whereas the wire and strand are concerned, they have not mentioned how much percentage of the capex would go to buyer. So I just did the averages of the last 2 years and calculated its, future sales. Whereas I just focus on wire rope the most because it is like 67% of the company's revenue. So here is this map. In the capex, the company is planning to make a capex of 310 crores in FY 2024, where in FY 2025, they are planning for 229, which is divided into two. That is phase 2, which includes 167 crore of Ranchi, which they are planning after completing the phase 1, that is 310 crores. And then the second is including the Thailand one, the Thailand 62 crore expense they are planning to make for the wire rope. So as the expense would be made in what they have mentioned that the 310 crore capex is already done and its production will come online at the end of the quarter 3. So that's and this will come online in 2026. So the capacity which will increase, which is like 47,000 and 13,000 as mentioned on call, the additional ton of production like the capacity one is like the capacity which is going to increase multiply by 3 by 12 because it is only available for 3 months. Is that okay? Yeah, so actually it's tough for me to comment. I need time to absorb these things. So you can explain and then we'll maybe have a longer discussion on your sheet. Okay, sir. Okay. So just once again, what I did कि उनका कैपेक्स होने वाला है 310 करोड़ का, ठीक है. उन्होंने बोला है कैपेसिटी बढ़ेगा 47,000 का, राइट. तो एडिशनल उनका कैपेसिटी कितना बढ़ेगा फॉर दिस, मतलब फॉर दिस ओनली 3 months बिकॉज एट द एंड ऑफ द क्वार्टर 3 ये कंप्लीट होने वाला है प्रोजेक्ट. तो 3 months. So इसके लिए मैंने इसको मल्टीप्लाई किया था with 3 by 3. Yeah, I got that. So for this year, you are assuming only 11,000 tons of capacity will come. Yes, right? Yes. Yeah. And for FY25, it is less. ये वाला पूरा यूटिलाइज होगा 47,000 वाला, क्योंकि ये वाला आएगा FY26 में. FY26 is the phase 2 capex. Yes, phase 2 plus वो थाईलैंड में कैपेक्स हो रहा है 62 करोड़ का. Okay. हाँ, और यहाँ पे मैंने क्या किया, ये 47,000 प्लस D7, मतलब ये प्लस ये 13,000 का कैपेसिटी जो यहाँ पे इंस्टॉल होगा. ठीक है. फिर आगे वायर रोप वॉल्यूम टन, यहाँ पे वायर रोप का मतलब उन्होंने बताया था अलग से, सिर्फ इसका अवेलेबल है 79,000, 85,000, 93,000. आपने पूछा था ना सर, वो ये रहा. फिर रिवेन्यू जो अभी हमारा अभी ऑलरेडी हो चुका है, दैट इज 1, ये वाला रिवेन्यू इन करोड़ है. तो मैंने इसमें क्या किया, वही एज यूजुअल, दैट इज रिवेन्यू डिवाइड बाय वायर रोप का एमटी पर टन. तो हमको ये मिलता है रिवेन्यू पर टन. ये जो रियलाइजेशन गेन हुआ है FY23 में, ये फिगर काफी बढ़ा है, राइट. ऑलमोस्ट लाइक 20% से बढ़ा है. तो any idea on the sort of sustainability of this realization gain? ये फिर reversion to mean हो जाएगा या this is sustainable? सर आप कौन से गेन की बात कर रहे हैं? सॉरी, रेवेन्यू पर वॉल्यूम जो रियलाइजेशन कैलकुलेट किया है ना तुमने, वो बढ़ रहा है, तुम्हें दिख रहा है ना. हाँ. FY23 में FY22 के मुताबिक लगभग 20% बढ़ चुका है, और अगर FY21 के हिसाब से देखोगे तो 50% इंक्रीज है. सर ये फाइनल है, इससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा उसका. हाँ, बट लेकिन हाँ, तो मतलब मेरा क्वेश्चन सुन लो कि इज दिस समथिंग दैट विल मीन रिवर्ट बैक टू लोअर लेवल्स, या दिस इज दिस ड्यू टू सम सडन डिमांड स्पर्ट इन द मार्केट जिसके वजह से उनको बेटर रेट मिल रहा है, अभी थोड़े टाइम बाद फिर
रेट नॉर्मल हो जाएगा, या इज दिस ड्यू टू सम काइंड ऑफ प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट, और इज दिस गोइंग टू स्टे फॉर सम इयर्स? एनी व्यूज ऑन दैट? यस सर, एक्चुअली जब ये सवाल पूछा गया था कि आपका ये जो इंक्रीज हुआ है तो आगे कितना आपका एक्सपेंशन पॉसिबल, लाइक 75% यूटिलाइजेशन है अभी इनका अभी के जो प्लान्स है, तो उन्होंने मेंशन किया कि 75% से ज्यादा उनका अभी कुछ यूटिलाइजेशन नहीं होता, दैट इज द मैक्सिमम यूटिलाइजेशन वी कैन मेक आउट ऑफ द प्लांट। तो उन्होंने ये मेंशन किया था कि इट इज बेसिकली लाइक ऑर्डर बेसिस ना, तो उसके हिसाब से उन्होंने बोला कि जितना उनको ऑर्डर आता है, जितना वो प्रोड्यूस कर पाते हैं, इट इज लाइक 75% मैक्स। तो उन्होंने बोला था वो हो चुका है, दैट इज इन 2023। सो अगर सपोज उनकी डिमांड कम होती है इन द फ्यूचर तो ये भी नीचे जाएगा। आई मीन लाइक नीचे नहीं जाएगा, पॉइंट इज कि ऑफ कोर्स ये तो कांस्टेंट रहेगा लेकिन वॉल्यूम नीचे जाएगा। तो तुमने आगे के लिए जो रेवेन्यू पर वॉल्यूम एज्यूम किया है फॉर मॉडलिंग, वो कौन सा नंबर लिया है? अरे हाँ, नहीं मैं कुछ गड़बड़ तो नहीं की, मैंने गलत ले लिया। यस यस यस, मैंने ये ले लिया इंडिविजुअल ईयर्स का, वो नहीं लेना है, यही लेना था। जस्ट गिव मी अ सेकंड ना सर, अभी चेंज कर दूंगी। C13 क्या है? एक क्लीन टेबल चाहिए इनके, कितने कैपेसिटी है, कितना आ रहा है और कितना रियलाइजेशन है। आई थिंक हाँ, इसको तुम्हें बाद में सोनाक्षी आई थिंक ये दिखा दो, लेकिन उसके बाद यू हैव टू प्रेजेंट इन वन शीट, जिसमें समझ में आ जाए कि क्या क्या कहाँ पे क्या हो रहा है। जी सर। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बिजनेस है नहीं है। हाँ नहीं है। सब आगे जाऊं? ये ओल्डर कैपेसिटी रेवेन्यू क्या है? ये जो एक मिनट मैंने क्या किया, कैन इम्प्रूव द बेटर प्रोडक्ट मीन्स बट डू नॉट एक्सपेक्ट, ये वाला FY23 का ये जो पुराना रिवेन्यू है ना, तो इससे ज्यादा वो बेटर नहीं कर सकते, उन्होंने मेंशन किया था, तो उसके हिसाब से ये 2194 आई केप्ट इट एज कांस्टेंट। यस ओके, तो यू आर अज्यूमिंग कि मतलब उतना रेवेन्यू तो आएगा ही आएगा, ऊपर से जो कैपेसिटी आ रहा है वो भी रेवेन्यू बन जाएगा एट हायर रियलाइजेशन। यस I keep it, so उनका higher realization is 75%, I keep it at like 70%। मैंने यहाँ पे किया 70% ही रखा है। ये समझा नहीं मैं, 70% क्या होता है? बोला था कि वो 75%। अच्छा, तुमने यूटिलाइजेशन, यार मैं रियलाइजेशन बोल रहा हूँ, यू आर टॉकिंग अबाउट यूटिलाइजेशन। ओके सॉरी। तो तुमने यूटिलाइजेशन 70% रखा है, बट तुमने रियलाइजेशन तो यही लिया है ना, ये 0.0235914 जो भी तुम्हारा फिगर है उसको लिया है तुमने। यस सर। तो तुम अस्यूम कर रहे हो कि रियलाइजेशन विल रिमेन एट दीज हाई लेवल्स एंड न्यू कैपेसिटी विल बी 70% यूटिलाइज्ड। ओके, सो देयर इज वन मोर रीजन, ये जो मैंने ये अज्यूम किया है, इट्स बिकॉज जो कंपनी थी ना प्रीवियस इयर्स में, वो लोगों का क्या था, दो टाइप का बिजनेस था। एक था लो वैल्यू प्रोडक्शन बिजनेस, जो उनका लाइक वॉल्यूम ज्यादा होता था बट प्राइस कम होता था। अभी वो नए सेगमेंट में आए जहाँ पे प्रीमियम वायर रोप्स में वो फोकस कर रहे हैं, तो उसका प्राइस इज हायर, तो इवन दो उनका वॉल्यूम कम होगा पर उनका प्राइस ज्यादा होगा, तो रिवेन्यू ज्यादा होगा। ओके, तो बिकॉज ऑफ दैट मैं ये अभी FY 2023 का ही कांस्टेंट अज्यूम कर रही हूँ फॉर द कमिंग। ठीक है, ओके। एक क्वेश्चन है मेरा, C12 में जो सेल है रेवेन्यू फ्रॉम वायर रोप सेगमेंट, अच्छा सेगमेंट, डू यू मतलब रेवेन्यू पर वॉल्यूम इज तब 1,63,000 पर मेट्रिक टन, इज इट? ये क्या करोड़ में वैल्यू है सर ये वाला? हाँ, ये तो करोड़ में है, वो नीचे वाला वो बेसिकली 1 मेट्रिक टन ये लोग सेल करते हैं 1,63,000, राइट? हाँ दिस ओके, ठीक है सर। इज इट क्लियर? तो मैं आगे जाऊं? तो ये सिर्फ वायर रोप सेगमेंट के लिए था या ये ओवरऑल? सिर्फ वायर रोप सर। तो FY25 वाला कैपेक्स तो तुमने कहा कि वायर रोप और वायर में बटने वाला है, अभी तुम 13,000 पूरा वायर रोप लेके चल रही हो। नहीं सर, वो नहीं किया है मैंने। इसमें सॉरी, यहाँ पे ये जो 47,000 था ना, वो यहाँ पे तो 12 मंथ के लिए टोटली यूटिलाइज होगा ना? वो पता है, 13,000 जो FY25 का फिगर है जी,
मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि तो सर वो FY इसमें है लाइक 47,000 प्लस 13,000, उसका इम्पैक्ट इस पे है। हाँ, उस पे जो है तो वो तो कैपेसिटी वायर और वायर रोप में बटने वाला है ना, आई थिंक। जी सर, हाँ। और वायर्स का रियलाइजेशन वायर रोप से काफी कम है, ये रेवेन्यू पर वॉल्यूम नहीं होगा। बट सर उसमें प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने बाइफिकेशन नहीं दिया है वायर और वायर रोप का। ठीक और है, उन्होंने ये भी बाइफरकेशन। हाँ बोलो। उन्होंने ये भी बोला दे आर नॉट श्योर कि अगर वो वायर पे ज्यादा कंट्रीब्यूशन देने वाले हैं नहीं, बिकॉज अभी तक वो कैपेक्स किया नहीं है, तो दे वर फोकसिंग जस्ट ऑन वायर रोप, तो दे आर नॉट श्योर अबाउट इट। पर वायर रोप वो सर्टनली वो लोग इंक्रीज करना चाहते हैं इन द फ्यूचर, विच इज लाइक 70 to 75% बाय कमिंग 3 years। तो मैंने अभी जो रिवेन्यू कैलकुलेट किया उसमें भी इट इज लाइक 60 लाइक 71% कंट्रीब्यूशन आ रहा है इसका टू द रिवेन्यू। वायर रोप्स का जी 71%, एंड दैट इज देयर गोल कि 70% तक लेके जाना है। हाँ हाँ हाँ, मतलब 75 बोला था, 70 to 75। ओके ठीक है, तो यू थिंक दैट दिस assumption of 13,000 going to wire rope, that is not an unreasonable assumption, it's an okay assumption according to you? सर एक्चुअली आई हैव नो अदर बेस ऑफ अजम्पशन कि मैं वायर में कुछ एलोकेट कर सकूं, इसीलिए। देखो, मॉडलिंग में एक चीज ध्यान रखना है कि ओवरली एग्रेसिव assumption नहीं लेना है, तो ओवरली एग्रेसिव तो नहीं है ना ये assumption, दैट्स माय सर सॉर्ट आई थिंक सो कि ओवरली एग्रेसिव है, बिकॉज मैं अभी आपको एक और चीज बताऊंगी फाइनेंशियल मॉडल में, बिकॉज मैंने मार्जिन इंक्रीज नहीं किया है इनका, एंड दैट इज वन ऑफ द रीजन के दिस कुड गो विद द फ्लो। एक मिनट, ठीक है, चलो आगे आगे बढ़ते हैं, मतलब बहुत जंप नहीं करते हैं, लेट्स अज्यूम दैट एंड लेट्स मूव फॉरवर्ड, एंड देन जब मार्जिन की बात करोगे तो तब बताना है। ओके सर, तो ये रिवेन्यू वहां से आया है, वो ऑलरेडी अपडेट हो गया है। एंड यहाँ पे मटेरियल कॉस्ट मैंने यहाँ पे कांस्टेंट रखा है, एंड इवन दो उन्होंने बोला था उनका मार्जिन इंप्रूव होगा, उसका वन ऑफ द रीजन ये है कि यहाँ पे 57% से 67% का वायर रोप का कंट्रीब्यूशन टू द रेवेन्यू हैज इंक्रीज्ड, बट उनका मार्जिन हैज नॉट इंप्रूव्ड एट ऑल फ्रॉम द लास्ट 2 to 3 years। तो फॉर द सेफर साइड आई कीप इट लाइक 55%। तो अगर उनका सर्टन परसेंटेज अगर वायर में भी जाता है तो उनके मार्जिन पर ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, हाँ, और अगर जीपी मार्जिन तो ऑफ कोर्स इट रिमेन्स टू कांस्टेंट फॉर द कमिंग 3 years बिकॉज ऑफ दिस, whereas मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट वो क्वाइट कांस्टेंट रहा है पिछले 3-4 सालों में, एंड कंपनी ने भी यही बोला था कि उनका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इंक्रीज होगा विद द रिस्पेक्टेड टू द सेल्स। इट्स वन ऑफ द रीजन कि उनका कैपेक्स होगा इस वजह से। Whereas the employee cost has been constantly increasing, so I keep it at 11% because manpower will be required for the capex investment. In fact, इससे ज्यादा हो भी सकता है, पर मैं इसमें इंक्लूड नहीं कर रही बिकॉज वो अदर एक्सपेंसेस में इंक्लूड हुआ है, बिकॉज उनके एनुअल रिपोर्ट में मेंशन है कि उन्होंने सेलिंग एंड एडमिन कॉस्ट अदर एक्सपेंसेस में इंक्लूड किया हुआ है। So I kept the employee cost at 11%. Other cost has been quite constant at 9%. Whereas the expenses coming to the 84% of the total margin. उन्होंने बोला था कि वो 18% ऑपरेटिंग मार्जिन अज्यूम कर रहे हैं फॉर द कमिंग इयर्स, बट मुझे नहीं लगता कि वो मेंटेन होगा इन द फ्यूचर। वन ऑफ द रीजन मैंने अभी आपको ऊपर बोला कि इवन तो उनका वायर रोप सेगमेंट हैज इंप्रूव्ड, उनका इंटरनेशनल मार्केट हैज इंप्रूव्ड, उनका मार्जिन इंप्रूव नहीं हुआ है। इट इज लाइक बेसिकली द मटेरियल कॉस्ट। तो इसके वजह से मुझे ऐसा नहीं लगता कि अभी आगे कंपनी का कोई मार्जिन इंप्रूव होगा अनलेस वी सी इट। तो कंजर्वेटिव पर्पस के लिए ये मैंने कम ही रखा है। राइट। अदर इनकम सर उनका काफी कंसिस्टेंट और ज्यादा रहा है प्रीवियस इयर्स में, तो लेकिन अभी लास्ट उनका 39.8 था, तो आई केप्ट इट बिकॉज उनका quite consistent और थोड़ा heavy रहा है other income, which is mainly like dividend income और जो investments उन्होंने किया है, तो इसलिए capped 39.8. Depreciation, I'll go to that. Depreciation में जैसे हमने capex किया है यहाँ पे, so what I did कि मैंने पहले calculate कर लिया था depreciation rates, and after that उनका जो net block है that is the opening asset for the next year, तो इसको मैंने कैलकुलेट किया, इस पे 7% प्लस इस पे जो उनका कैपेक्स होगा उसके लिए कैलकुलेट किया है। तो इट इज लाइक कैपेक्स फॉर 3 months एज एक्सपेक्टेड, तो 3 महीने का ही कैलकुलेट किया बिकॉज FY24 में 3 month के लिए यूटिलाइज होगा। फिर FY2025 में आई टेक इट लाइक होल, जो भी इनका नेट ब्लॉक आएगा वो इंक्लूडिंग दिस कैपेक्स, प्लस यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं होगा बिकॉज अभी तक कैपेक्स हुआ नहीं FY2026 का। यहाँ पे FY2026 का यूटिलाइज होने लगेगा, तो ये वाला कैपेक्स प्लस ये वाला कैपेक्स
जो ये वाला नेट ब्लॉक था उन सबका एडिशन पे लगेगा डेप्रिसिएशन एट 7%. ऑफ कोर्स ये नेट ब्लॉक पे मैंने ऐड किया 229. मेरे लिए या सोनाक्षी, बट मेरे लिए एक चीज, आफ्टर दिस प्रेजेंटेशन विल यू मेक समथिंग, एक सिंपल टेबल में करंट 2023 तक कितना कैपेसिटी है, कैन यू मेंशन दैट, एंड 2024 के एंड में कितना होगा, 2025 के एंड में कितना होगा कैपेसिटी, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फॉर ईच ऑफ दीस सेगमेंट? अगर ये, इफ दिस इज क्लियर टू यू, मे बी एक टेबल में कैन यू मेक दैट? हाँ, मैं बनाऊंगी सर. ओके. सोनाक्षी, वन क्वेश्चन ऑन डेप्रिसिएशन. 310 करोड़ का जो कैपेक्स है वो इस साल Q4 में वो कैपिटलाइज हो जाएगा, राइट? जी. मतलब FY25 में उसका पूरा डेप्रिसिएशन आएगा जी. तो 310 करोड़ का 7% डेप्रिसिएशन आना चाहिए, करेक्ट? तो 310 का 7% होता है 22 करोड़. तो अगर तुम्हारा FY23 में 67 करोड़ डेप्रिसिएशन था तो उसमें कम से कम 22 करोड़ तो ऐड होगा ना FY25 में, तो कम से कम 90 करोड़ होना चाहिए डेप्रिसिएशन. तो मतलब आई डोंट नो हाउ यू कैलकुलेटेड, एक बार कैलकुलेशन अपना चेक करो. FY25 में इतना कम कैसे है डेप्रिसिएशन? सर एक मिनट, अभी लेट्स नॉट स्पेंड टाइम ऑन इट, यू थिंक अबाउट इट. 310 करोड़ FY24 में फुल्ली कैपिटलाइज हो जाएगा, इसका मतलब FY25 में उसका पूरा 7% डेप्रिशिएट होना चाहिए, राइट? सर मैं आपको यहाँ पे ही बता देती हूँ, ये जो टोटल एसेट है ना इस साल का, वो यहाँ पे आया है 310 प्लस जो प्रीवियस ईयर का हमारा नेट ब्लॉक था, तो वो टोटल एसेट फॉर FY 2024 हुआ. इस पे मैंने 7% कैलकुलेट किया, दैट इज 70.39, और इसको माइनस करके मतलब टोटल एसेट माइनस दिस मेरा नेट ब्लॉक आया है. टोटल एसेट 1262 कैसे आया? 1192 इज योर करंट नेट ब्लॉक. ये प्रीवियस ईयर के नेट ब्लॉक में 310 ऐड होगा ना? अच्छा, प्रीवियस ईयर का FY23 नेट ब्लॉक में 310 ऐड किया तुमने? यस सर. तो 952 में 310 ऐड होके इतना आया. फिर उसके बाद इस पे मैंने डेप्रिसिएशन चार्ज किया 7%. ठीक है. और ये माइनस ये आया, और इस पे एंडिंग नेट ब्लॉक है. हाँ. ओके. इज इट क्लियर? हाँ, दिस मेक्स सेंस. वो नेट ब्लॉक वो ओपनिंग एसेट होगा 2025 का, राइट? वो 2025 का ओपनिंग नेट ब्लॉक है 1192. ये सेम. हाँ, राइट. ठीक है. ओके. और यहाँ पे ये ऐसे मैंने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया है. और जहाँ पे इंटरेस्ट मॉडल इज कंसर्न, तो कंपनी ने बोला था कि वो जो कैपेक्स करे उसका 25% वो यहाँ से लेंगे. सो व्हाट आई डिड वाज लाइक 416 प्लस 25% ऑफ 310. तो वैसे मैंने ये डेट कैलकुलेट किया है. ओके. और डेट पे डाउन करने का इनका कोई प्लान नहीं है या नहीं? इस साल कितना पे डाउन किया? लेट मी चेक. एक्चुअली मैंने क्योंकि वो पे डाउन करेंगे, उसका रीजन ये है कि वो बाकी का जो 75% है वो अक्रूवल से लेंगे, तो उनका कैश फ्लो वहां यूटिलाइज होगा. अच्छा, ओके. अभी पे तो कर रहे हैं हर साल सोनाक्षी, हर साल कर रहे हैं, बट मतलब नेट पे आउट कम है क्योंकि थोड़ा डेट ले भी रहे हैं. एग्जैक्टली. तो मे बी थोड़ा तुम्हारा डेट कम हो सकता है इससे, बट ठीक है. मतलब सर ये कर दूंगी चेंज. हाँ, देख लेना. अगर मतलब आई थिंक लास्ट 2-3 साल से नेट डेट वो घटा रहे हैं थोड़ा सा. मैं देखा वो. हाँ, तो मैं कर देती हूँ, इसमें चेंजेस कर दूंगी. ठीक है. ओके. यस. इनका इंटरेस्ट रेट अचानक से घटा है FY23 में. ये क्या क्रेडिट रेटिंग इंप्रूव हुआ है या क्या हुआ है? क्रेडिट रेटिंग इंप्रूव हुआ है A+ पे. कैन यू गो टू दैट शीट अगेन, वो जहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेट किया तुमने? एक मिनट. हाँ, ये रहा. हाँ. इसका मेन रीजन ये था कि वो 2020 में जब उन्होंने डाइवेस्टमेंट किया था तो उनका ऑपरेशन बेटर हो गया है, उनका रिवेन्यू बेटर हो गया, तो उनके ग्रोथ के वजह से उनका एबिटा कवरेज रेशियो हैज इंप्रूव्ड अ लॉट, वो जो मैंने स्लाइड में बताया था. हाँ, नहीं वो सब रीजन पता है, बट तुम कह रहे हो कि ये क्रेडिट रेटिंग इंप्रूव होने की वजह से इसका पूरा इम्पैक्ट FY23 में ही आया है. FY22 तक भी ये लोग हायर इंटरेस्ट रेट पे कर रहे थे. यस सर. तो क्योंकि वो उनका प्रीवियस लोन भी तो था उसमें, इसीलिए. और दे आर पेइंग ऑफ द डेट ना थोड़ा, तो जो नया डेट ले रहे हैं वो लोअर इंटरेस्ट रेट पे है. ओके. ठीक है.
सो इंटरेस्ट रेट में चेंज करके आपको वापस से भेजूंगी। हाँ वो माइनर ही चेंज होगा, ठीक है कर देना वो, लेकिन आई डोंट थिंक इट्स गोइंग टू बी एनीथिंग मेजर। और यहाँ पे टैक्स रेट मैंने 25% अज्यूम किया बिकॉज इट इज क्वाइट फ्लक्चुएटिंग, तो हाँ ठीक है। हाँ, और नेट प्रॉफिट मार्जिन इतना आया है। टैक्स पे कोई गाइडेंस उन्होंने नहीं दिया है? नहीं, कोई गाइडेंस नहीं दिया था। ओके ठीक है। ओके यहाँ पे EBITDA उन्होंने लाइक मैंने बिकॉज 2020 में उनका डाइवेस्टमेंट हुआ था, तो मैं लास्ट 5 ईयर 10 ईयर नहीं ले सकती थी, तो 3 1 ईयर 0.5 ईयर्स मैंने लिए थे। मैंने एक्सपेक्टेड 15 डाला है, रीजन इज प्रीवियस 1 मंथ में इट वाज 15 बिकॉज उनका जो अभी रिजल्ट आया था व्हिच वाज बेटर एंड इंप्रूविंग, और उनके पास जो प्रोजेक्ट्स आए हैं यूरोप में, अमेरिका में, सो बिकॉज ऑफ दैट द कंपनी इज एक्सपेक्टिंग द बेटर फ्यूचर, तो उनका जो 15 है आई थिंक इट इज quite eligible. I think ठीक है, fair है, मतलब it's not something which is ठीक है। okay so based on that मैंने यहाँ पे इसको एक बार 20 करो। 20 करूँ? हाँ एक बार करो, मुझे बस मार्केट कैप देखना है। It's already 10,000 crore. हाँ 13,000 ये कौन से साल का मार्केट कैप है? FY25 का। 24 को थोड़ा एक्सपेंड करोगे in column K, but very nicely made sheet, I think. Yeah, this is a good valuation sheet. We should implement this across. I mean, सब इसी में, and also I like the way you have put in all the connotation over here. It's very easy to read. तो ये 13,000 मार्केट वैल्यू इज फॉर एक मिनट में यहाँ पे FY25। ओके हाँ 25 नहीं, फ्रीज करने की जरूरत नहीं है यार, दिख गया। FY25 ओके ठीक है। ठीक है ओके, यू कैन रिवर्ट इट बैक टू 15। आई थिंक अभी 18 पे है वो, तो अभी 18 पे हुआ, बट आई डोंट वांट टू गो फर्दर, मतलब लास्ट मंथ में 16 था तो 15 लिया है। या नहीं, आई थिंक इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्लेस एन एग्जैक्ट नंबर। ये मेरे ख्याल से अगर ऐसा परफॉर्मेंस आता रहा तो ये 15 से 20 के बीच में कहीं रहेगा मेरे ख्याल से। आई थिंक फिर वो 18 तो डेफिनेटली जाएगा, फिर 18 वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है ओके। नहीं, बट ऑप्टिमिज्म भी बढ़ता है ना। आई मीन मार्केट इज इन अ बुल साइकिल, सो ऑप्टिमिज्म बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा। ये भी हो सकता है। वन ऑफ द रीजन इज ऑल्सो कि अमेरिका में क्या हुआ है कि जो बीबीजी करके एक बहुत बड़ी कंपनी थी वहां की, उन्होंने ऑपरेशन इन वायर रोप बंद कर दिया है फॉर सर्टेन दे हैव नॉट मेंशन। नहीं वो नहीं पता सर वही, लेकिन उन्होंने बोला कि फॉर द लाइक टेम्पररी उन्होंने बंद किया है फॉर द ऑपरेशन बिकॉज ऑफ सर्टेन इंटरनल इश्यूज दे हैव मेंशन। तो उसके वजह से वो मार्केट अभी मोस्ट प्रोबेबली इनके पास आने वाला है, विच अभी तक नहीं आया बिकॉज बाकी के प्लेयर्स है जैसे ओलिवर है, किसवायर है। किसवायर इज वेल नोन फॉर दी एलिवेटर रोप, ओलिवर इज वेल नोन फॉर द क्रेन रोप, तो दूसरे और कॉम्पिटिटर्स है उस मार्केट में, बट इनके पास भी चांस ज्यादा है टू कैप्चर द मार्केट। तो कहीं ना कहीं इस वजह से इतना ऑप्टिमिज्म है मार्केट में कि कंपनी कैन डू बेटर इन फ्यूचर। Yes, that is also one of the thesis that is running. Ki Usha Martin is able to deliver product at their level, and they are able to capture market share from them. So ये तो definitely है। ये कोई तो मेरे को एक्सपोर्ट डेटा देख के बोल रहा था गौरव कि इनका जो ग्रोथ अब तक आया है दैट इज ऑल ड्रिवन बाय प्राइसिंग नॉट बाय वॉल्यूम। तो मैंने ये चेक नहीं किया है, चेक करके देखता हूँ। बट एंड आल्सो देयर इज वन फिगर निर्वाण, इफ ऑयल गोस टू $100 तब इनके रियलाइजेशन इंप्रूव्स फॉर द नेक्स्ट 2 इयर्स, ऐसा कुछ है यहाँ पे। हाँ मतलब देखो अगर ऑयल का प्राइस बढ़ेगा ना और ऑयल से प्राइस का विजिबिलिटी बढ़ेगा तो यू सॉ ना इनके लिए ऑयल एंड माइनिंग दीज आर द मेजर कंट्रीब्यूटर्स फॉर वायर रोप रेवेन्यू। तो वो तो सब कुछ उनका बेटर हो जाएगा। ऑयल अगर अच्छा करेगा, माइनिंग अच्छा करेगा तो इनका सब बेटर होगा। और पोर्ट लॉजिस्टिक्स, एनी आइडिया? आई मीन वहां पे भी तो क्रेन में ये लगता है ना। हाँ तो पोर्ट मतलब कोई भी लॉजिस्टिक्स कंस्ट्रक्शन these are for cranes, and basically mining and oil and gas these are for those kind of ropes. I think मतलब end driver industries अगर देखना है तो I think these are the key industries. और एक चीज है, I mean even if you don't use it, मतलब इंडस्ट्री में अगर लग गया and you need to replace, वो 8 साल में रिप्लेस करना ही पड़ेगा तुमको, even if they don't get used. 8 साल नहीं, आई थिंक बहुत जल्दी रिप्लेस करना पड़ता है ना सर। सब अलग अलग सेगमेंट का अलग अलग में ऐसा है कि अराउंड लाइक 1 ईयर में तो रिप्लेस हो ही जाता है, 12 मंथ्स में। फिर उसके बाद LRPC का मतलब लाइक अलग अलग सेगमेंट का अलग अलग रिक्वायरमेंट है। क्रेन में 3 to 12 मंथ्स है, माइनिंग में इट्स लाइक 8 to 16 है, 8 to 18 मंथ है, और एलिवेटर में इट इज 3 to 8 इयर्स है, 3 to 8।
और जो ब्रिजेस में लगता है ना जो वायर रोप्स, तो वहाँ का इट्स लाइक 8 to 12 years ऐसा है। राइट। मैं पेस्ट करता हूँ डोनाल्ड का ही एक। हाँ उनका है, मैंने उसी में रीड किया था। परफेक्ट, यस, वेरी गुड, वेल रिसर्च्ड। ठीक है, समझ में आ गया। तुम्हारा प्राइस टू सेल्स भी ऐसा ही कुछ बता रहा है। और सर उसमें एक और चीज है, उनका जो रेवेन्यू है 70 to 72% उनका रिप्लेसमेंट से ही आता है। ओके, या नाइस बिजनेस, या प्लीज कंटिन्यू। सॉरी। यहाँ पे मैंने वो मार्केट कैप बैक कैलकुलेट किया एंड प्राइस पर शेयर करके मैंने ये प्राइस लेके आई हूँ। देन मार्केट कैप टू सेल मैंने सेम उसी रीजन से 2.3 लिया है, 1 month का जो एक्सपेक्टेड था उसके हिसाब से, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग इट टू बी कंसिस्टेंट फॉर द कमिंग 3 years। और उसके हिसाब से मैंने एक सेल्स और मार्केट कैप कैलकुलेट किया, फिर टोटल नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करके प्राइस पर शेयर कैलकुलेट किया है। इज दैट हाँ। फिर उसके बाद यहाँ पे बेस मॉडल 1 and 2 मैंने यहाँ पे प्राइस कैलकुलेट किया था, फ्यूचर प्राइसेस जो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ उसके हिसाब से वी हैव टू वेट टिल FY26 टू गेट द रिटर्न बेटर, एंड आई थिंक उससे ज्यादा ही आएगा, बट बीइंग कंजर्वेटिव मैंने ये कम रखा एंड दैट्स व्हाई इट इज 21%। बाकी आई थिंक दैट इट वुड बी बेटर इन फ्यूचर। ये 21% कैगर है ना? नहीं सर, ईच ईयर कैगर। ये एब्सोल्यूट है या ये कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट है? एनुअल ग्रोथ रेट है सर। नहीं, ये तो एनुअल ग्रोथ रेट नहीं है, ये तो ओवरऑल रिटर्न है कि आज से 3 साल में टोटल 21% है। मतलब FY23 से यहाँ पे, सॉरी हाँ, मतलब 3 साल में 21% बनेगा, राइट? यस। तो जनरली जब रिटर्न्स प्रेजेंट करते हैं सोनाक्षी, ऐसे प्रेजेंट नहीं करते हैं। यू हैव टू प्रेजेंट इट एज अ CAGR। So you have to do basically H53 divided by तुम्हारा वो E53 to the power 1/3 minus 1। ठीक है, हमेशा CAGR प्रेजेंट करना। एब्सोल्यूट इज वेरी मिसलीडिंग। डेफिनेटली सर, आई कीप इन माइंड। ठीक है, ये तो प्राइस टू सेल्स तुमने मल्टीपल भी लो लिया है। हमने वो EV EBITDA में देख लिया जो देखना था। आई थिंक अगर 20 के आसपास का मल्टीपल रहेगा तो पैसा बनेगा इसमें। अगर 20 से कम मल्टीपल रहा तो अब यहाँ से ज्यादा पैसा नहीं बने। एक बार फिर 20 डालना। हाँ डाल। अभी मार्केट कैप क्या है इनका? अभी 9,000 कुछ मार्केट कैप है, 10,000 करोड़ मार्केट कैप है। तो 20 डालने पे एक साल में तो कुछ पैसा नहीं बनेगा, 10%। हाँ, 2 साल में तो तुमको 15% कैगर मिल जाएगा, 30% 35% बनेगा। तो गौरव, दैट इज सॉर्ट ऑफ, मतलब अब देखो यार, यूफोरिया में तो मार्केट इसको 25 भी दे सकता है। स्पेशली बड़े लोग लगे हुए हैं तो कुछ भी हो सकता है इसमें, लेकिन मतलब सॉर्ट ऑफ रैशनल बेस्ट केस में 15-16% कैगर बन सकता है इन 2 years। That is what it looks like, provided revenue वाला पार्ट मुझे उतना क्लियर नहीं है। तो सोनाक्षी, व्हाट गौरव has asked you to do, उसमें तुम एक काम करो, तुम वॉल्यूम का भी एग्जिस्टिंग प्लस जो आ रहा है कैपेसिटी वो भी डालो, और तुम उसके साथ साथ एक और टेबल में रियलाइजेशंस डालो कि तुमने क्या एज्यूम किया है रियलाइजेशंस। ओके। फिर मल्टीप्लाई करके दिखाओ कि इतना रेवेन्यू आ रहा है। ठीक है, वो जो तुमने बताया इतना सारा, वो एक शीट में उसको डालो कि एग्जिस्टिंग वॉल्यूम क्या है, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन क्या है। ठीक है, लिख लो अगर तुम्हें लिखना है तो, या बाद में रिकॉर्डिंग में सुन लेना कि एग्जिस्टिंग वॉल्यूम कितना है, एग्जिस्टिंग कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कितना है। ये अगर प्रोडक्ट सेगमेंट वाइज कर सकती हो तो करना, नहीं कर सकती तो ओवरऑल बताओ। फिर नया कैपेक्स में कितना, कौन से प्रोडक्ट का कितना आ रहा है, वो भी अगर प्रोडक्ट वाइज नहीं बता सकती हो तो ठीक है, ओवरऑल बताओ। और फिर दिस इज द वॉल्यूम पार्ट, एंड देन देयर विल बी वन टेबल जहां पे तुम हिस्टोरिकल रियलाइजेशन दिखाओ 3-4 साल से। FY19 से आई वुड प्रेफर, FY19 से FY23 तक सेगमेंट वाइज रियलाइजेशन क्या रहा है पर टन, और तुम्हारा क्या एजम्पशन है गोइंग फॉरवर्ड। फिर FY24-25 में वॉल्यूम, और 25-26 में वॉल्यूम और एज्यूम्ड रियलाइजेशंस को मल्टीप्लाई करके फाइनली एक रेवेन्यू का। तो तीन टेबल बनेंगे, समझ गई ना? यस सर। एक वॉल्यूम का टेबल बनेगा, एक रियलाइजेशन का टेबल बनेगा, और एक फाइनल रेवेन्यूज का टेबल बनेगा। ओके, ठीक है, और जैसे तुम यहाँ पे कॉल आउट्स देती हो, अगर कोई रेलेवेंट अजम्पशंस है, कुछ है, तो गिव दैट एज अ कॉल आउट। तो वन शीट शुड ओनली बी ऑन रेवेन्यूज and the second sheet can be this sheet. मतलब these are the two sheets I think that we should concern ourselves with. And the third sheet can be जहाँ पे तुमने
इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन मॉडल किया है। यही 3 शीट फाइनली हमें देना। बाकी तुम ठीक है अपेंडिक्स के तौर पे बाद में तुम शीट्स रख देना, बट द फर्स्ट 3 शीट्स शुड बी दीज बेसिकली, कि रेवेन्यू कैसे मॉडल हुआ, इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन कैसे मॉडल हुआ, और फाइनली ये ओवरऑल मॉडल एंड वैल्यूएशन। जी सर। Yeah, but don't remove any of these parts of the sheet. I Yeah. think this is very useful. Yeah. We'll try to standardize this across, right? I think it's very clean. Yeah. All right. Great. I think very good presentation. At least it's a complicated, मतलब information तो बहुत scattered है and all. Yeah, I think very good job on collating all the data to come up with a model which makes sense. I think very good job on that. थैंक यू सर। एक चीज तो है कि उषा मार्टिन का वंस यू मॉडल रेवेन्यू, बाकी चीजें मॉडल करना आसान है, क्योंकि काफी उनका every cost is pretty stable, right? So that makes our job a little easier. My concern is with respect to your assumption, Sonakshi, ki realization FY23 वाला ही continue करेगा, ठीक है? Yes. So Nirvan, actually Ankit has a post on this and he says that management also says that because ये pass on कर देते हैं prices. That's how the agreement is. Right. So this has been a key concern for everybody, that realization ऐसा ही रहेगा कि नहीं. So management has been saying that, and I think Donald also said the same thing in that conference meeting also. Right. Realization में hit नहीं खाएगा. चलो फिर तो बढ़िया है. But it has already priced. जो price होना तो हो गया. वो हो चुका है. अब तो बस 15-16% वाला गेम है. हाँ. But still, it's a good business to look at. और especially the turnaround part. मतलब turnaround होने के बाद जो यहाँ तक पहुँचा, it's quite a big number. I mean, I think it's a 20 bagger. Yeah. No, the time to buy was Gaurav, मतलब 1 year ago or 1.5 years ago. जब थ्रेड शुरू हुआ था मार्च 2021. हाँ, तो तब तो चलो ठीक है यार, मैं उतना एक्टिव भी नहीं था, कोई बात नहीं, अगली बार नेक्स्ट ऐसे टर्न अराउंड कंपनी में पैसा बना लेंगे. All right. Okay, Sonakshi, good job, thank you. And